Hi friends, welcome back to my channel, and this is you can see the difference as I'm hydrating myself in the morning. But this is particularly when I'm fasting, so you can see the changes in my face. Even 1 day of fasting makes a lot of difference. Like yesterday, as I said, I was craving to eat not food but non-veg, or wo bhi from a restaurant. It happens, and I'm in a naughty mood actually. Pura 7 days I'm off public eye except for Sunday when I went. Oh, when I went for the prayers in the afternoon also ना, तभी कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था, मतलब सिर्फ सिंगिंग चल रहा था, and I became a part of singing. I said since I've gone, it was only for half an hour, and I said I went as like a thank you, क्योंकि मुझे पता था कि crowd भी ज़्यादा नहीं है, and just वो. The best part is that when I was at the mic, because I used to sing previously, I was in the singing group many years ago. So मुझे याद नहीं वो गाने वाने इतना, मतलब याद है, मतलब मैं सुनती हूँ लेकिन याद नहीं है. So when I was, and after 1 year ago also, I used to sing in the mornings, maybe for a month or two or so. Then what happened is that I'm not very much in tune with all those songs. So when I was at the mic, I just said, and usually मैं chappal, I don't wear my footwear when I'm singing songs. चाहे वो कोई भी गाने हो, generally I don't like to wear my footwear. So वो साइड में रख के मैं माइक के पास थी, and I said भगवान शक्ति दे. Now that other female, that other old auntie was sitting. God, she had come so decked like a crazy, like a teenager. वो जो t-shirt और वो pedal pusher, मैंने बोला you are 70 plus and so much makeup थोप के, foundation, lipstick, और पता नहीं, she looked like one clown. Okay, now this female is like, what do you mean by Shakti Day? Even we are there. I said it is not for you, it is not for the collective, it is for me and for myself, because I am doing this after a year, so you don't take it personally. People are triggered just like that. And her husband used to be in the yoga class, I remember, many years ago. Stupid female she was. I said, why is she such a clown? It's afternoon 1 o'clock. कौन आता है ऐसे foundation, lipstick, mascara, mental, pedal pushes and a t-shirt. You come for a prayer thing, so you come like this. बहुत weird females है, जवानी की लहरें थोड़ी. किसके लिए होते ये फीमेल्स लगते हैं? They take it too personally. Everything is their own business. I still have my toast, which I'm eating very, very slowly. In the evening, and I might have 2 oranges just to balance it out. And this peanuts are still there. Since I'm eating three different varieties, and I'm eating them very, very slowly, because this is my lunch, brunch, जो भी है, and I'm enjoying this with you people. So I'm going practically very, very slow. Tomorrow something I'll make that khakra tomato pizza tomorrow. That's if I feel like eating.
a whole meal. Maybe I might just go on a fast for next 3-4 days and eat directly on Sunday भी हो सकता है. Tomorrow I might just eat some fruits. This herbal tea has kept me on. Do you need yoga as an exercise? तुम्हारे खाने पीने पे तुम्हें अगर कंट्रोल नहीं है, तुम योगा करो, जिम करो, जुम्बा करो, पिलाटेस करो, कौन से भी टाइप के योगा करो, वॉकिंग करो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. योर डाइट, योर इंटेंशन, एक्शन, योर डाइट and your exercise should be aligning with your goals. Like just say as I said, I'm a fitness freak. At the same time I'm open to, I'm not a fanatic. Like जैसे मैं एक्सरसाइज करके पतली हूँ ऐसा नहीं है. It's because of my diet and genetics. और मैं खुद भी वैसी हूँ. It takes a lot of willpower. Why am I sharing these stories with you people? But I will say there are other people who are, see, whatever they tell you in their interviews is always a half truth. It's always a half truth. ये कहीं ना कहीं से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं और इनके recommendations होते हैं. वो they just don't walk up like this. They don't just walk up like this. You won't be able to survive one single day. Don't be so clueless about life. There's a lot of activity. Last year I remember there was a whole lot of construction happening on the road. तो हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है. और ये रेंटल्स पे भी जो देते हैं ना, उनको अपना घर को पेंट करना पड़ता है. मतलब पर्सन इज़ लिविंग आफ्टर 1 year और 2 years जैसे भी है, ये अपने घर को थोड़ा नीट नाइस करने के लिए वैसे भी पेंटिंग और वो थोड़ा सा रिपेयर वर्क करते ही है, करना ही पड़ता है. बिकॉज इफ़ यू हैव टू, इफ़ दे आर पेइंग अ गुड सम ऑफ अमाउंट, व्हाई नॉट गिव देम अ गुड डील. मेरे साइड का जो फ्लैट खाली पड़ा वो रेंटल्स पे है, दैट ओनर रियली मेंटेन्स हिज फ्लैट. लाइक एवरी टाइम द टेनेंट लीव्स ही रेनोवेट्स द फ्लैट. हमेशा पेंटिंग करता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसका नीट एंड नाइस ही रहता है. मतलब ऑल द टाइम इस तरह से उसका फ्लैट मेंटेन्ड है. और उस फ्लैट में ना लोग 2 साल 3 साल मिनिमम रहते ही है. 2 साल तो रहते ही है. इट्स वेरी रेयर कि किसी ने 1 साल में छोड़ा होगा. 2 साल, क्योंकि वो फ्लैट में 2 विंडोज़ हैं. जैसे यहाँ पे मेरे सामने 1 विंडो है ना, तो उनके ये साइड में भी बहुत बड़ा विंडो है. वेरी स्ट्रेंज. तो लिविंग रूम और बेडरूम में बहुत बड़े बड़े 2 विंडोज़ हैं और थोड़ा बड़ा है उनका फ्लैट, क्योंकि लिफ्ट अंदर नहीं आती है. मेरे घर में लिफ्ट अंदर आती है.
तो स्पेस इज़ ऑल्सो बिगर एंड द किचन इज़ ऑल्सो स्पेशियस, कंसिडरिंग वो सिर्फ मेरा नेक्स्ट डोर फ्लैट है. सो स्ट्रेंज.